a really yummy cake. Would you like to have it? Oh, you can buy from any bakery store. Viewers, आज हम discuss करेंगे how to use food items in your as idiom in your English language. हमारी English language में बहुत सारे food items हैं जिसको हम as a idiom अपने sentences में use कर सकते हैं. So let's begin with that. Hi everyone, hope you are doing well today. So I really welcome you in our next topic, which is idioms. Food idioms हमारे पास बहुत सारे हैं जो English language में अपने sentences में use कर सकते हैं. First one, a piece of cake. I was having a cake. So here you can see a piece of cake means very easy. You can use it in your sentence. For an example, do you want to make assignment? You can give answer, yes, I want to make assignment. It's a piece of cake. Means it's very easy. Next is a big cheese. Big cheese हम कहते हैं very important person को. वो शख्स जो VIP है या very important person है उसके लिए आप कह सकते हैं a big cheese. You can use it in your sentence like this. Do you know Mark Zuckerberg? Yes, I know. He's a big cheese. Means he's very important person for all of us in the world. Now next one is use your noodle. Use your noodle का मतलब होता है use your brain. अपना brain इस्तेमाल करना. For example, brother, I need your help. तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि use your noodle. अपना दिमाग इस्तेमाल करो and solve the questions. So use your noodle means use your brain. Next one is a smart cookie. A smart cookie means a very intelligent person. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं. आप उनके लिए ये इडियम यूज़ कर सकते हैं कि यू आर अ स्मार्ट कुकी. आर यू अ स्मार्ट कुकी? जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, बट आई कैन से आई एम अ स्मार्ट. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, एन एप्पल ऑफ समवन्स आई. यू कैन यूज इट हियर. एप्पल ऑफ आइज कहते हैं आंखों का तारा. फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई मेरी आंखों का तारा है. माई ब्रदर इज एप्पल ऑफ माई आइज. अली मेरी आंखों का तारा है. अली इज़ एप्पल ऑफ माई आइज़. तो यहाँ पर समवन की जगह हम प्रोनाउंस और नाउंस को चेंज करते रहेंगे. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर रिगार्डिंग फूड idioms. आई वॉन्ट यू टू यूज दीज idioms in your sentences like a piece of cake, a big cheese, very important person. Use your noodle means use your brain. A smart cookie means a very intelligent person. And an apple of someone's eye means a person that is adored by someone. So that's all for today. I hope you like this video and enjoy this too. If you like this video, don't forget to share it, and yes, subscribe my channel. See you. Allah Hafiz.